हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेनो आर्मी। आई होप आप अपनी तैयारी जो है वो बहुत अच्छे से कर रहे हो। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के जो डिक्टेशंस हैं वो उसकी सीरीज हम कर रहे हैं। कुछ कुछ दिनों में मैं आपको ये डिक्टेशंस जो है वो लिखवा रहा हूँ। आप ये हमारे चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट के सेक्शन में देख सकते हो। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के मैंने काफ़ी डिक्टेशंस अभी तक लिखवा दी हैं और जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक हम कंटिन्यू करेंगे। और एग्ज़ाम कब होगा ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने पूछा था। तो एग्जाम का बेसिकली कोई वैसे तो आइडिया नहीं है, पर जिस हिसाब से लगता है मुझको तो दिवाली के बाद आपका एग्जाम होने के पूरे चांसेस हैं। दिवाली तक तो कोई भी चांस नहीं है, अगर क्योंकि होता तो एक महीने पहले आ ही जाता है कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन। और अभी तक कुछ नहीं आया है तो आप इसको दिवाली के बाद में मान के चल सकते हो। इसका मतलब है कि नवंबर में आपका एग्जाम हो सकता है। तो कुल मिलाकर के आपके पास 50 या 60 दिन मैक्स टू मैक्स बचेंगे। अभी हम जो डिक्टेशन लिखने वाले हैं वो पे पैरिटी के ऊपर है, लीगल डिक्टेशन है। 544 वर्ड्स हैं। इसको अभी आप लिखिए और उसके बाद में हम हमारी आगे की डिस्कशन करते हैं। गेट रेडी, 3, 2, 1 स्टार्ट। द कोर्ट अराइव्ड एट द कंक्लूजन दैट देयर could not be the slightest doubt that drivers engaged in the Delhi police force performed the same functions and duties as other drivers in the services of the Delhi administration and the central government, even though he belonged to a different department. The petitioner was held as entitled to the pay scale of rupees 260. Federation of All India Customs and Central Excise Stenographers Union of India decided by a two-judge bench. The petitioners in the above case were personal assistants and stenographers attached to heads of departments in the Customs and Central Excise Department of the Ministry of Finance. They were placed in the pay scale of rupees 550. The petitioners claimed that the basic qualifications, the method, manner and source of recruitment and their grades of promotion were the same as some of their counterparts attached to joint secretaries and other officers in the Central Secretariat. Para. The above counterparts, it was alleged, were placed in the pay scale of rupees 650. The petitioner's contention was that their duties and responsibilities were similar to the duties and responsibilities discharged by some of their counterparts. Premised on the instant foundation, it was their contention that the differentiation in their pay scales was violative of Articles 14 and 16 of the Constitution of India. The petitioners claimed equal pay for equal work. The assertions made by the petitioners were repudiated by the Union of India, whilst acknowledging that the duties and work performed by the petitioners was identical to that performed by their counterparts attached to joint secretaries and other officers in the secretariat, yet it was pointed out that their counterparts working in the secretariat constituted a class which was distinguishable from them. Para. It was asserted that the above counterparts discharged duties
of higher responsibility as joint secretaries and directors in the Central Secretariat performed functions and duties of greater responsibility as compared to heads of departments with whom the petitioners were attached. It was contended that the principle of equal pay for equal work dependent on the nature of the work done and not on the mere volume and kind of work. The respondents also asserted that people discharging duties and responsibilities which were qualitatively different when examined on the touchstone of reliability and responsibility could not be placed in the same pay scale, whilst controverting the claim of the petitioner, it was pointed out that the post of hearing therapist was not comparable with the posts referred to by the petitioner. It was contended that neither the qualifications nor the duties and functions of the posts referred to by the petitioner were similar to that of hearing therapist. Para. In the absence of equality between the post of hearing therapist and the other posts referred to by the petitioner, it was asserted that the claim of the petitioner was not acceptable under the principle of equal pay for equal work. During the course of hearing, the petitioner confined his claim for parity only with the post of audiologist. It was urged that educational qualifications as well as duties and functions of the posts were similar. It was contended that a hearing therapist was required to treat the deaf and other patients suffering from hearing defects. आई होप आपने ये पूरा डिक्टेशन अच्छे से लिख लिया होगा. बेसिकली जो हम क्लास के अंदर डिक्टेशंस लिखते हैं उसी की रिकॉर्डिंग मैंने आपको अभी चला करके दिखाई है. ठीक है, तो आप उसको अपने यूट्यूब के फीचर से एडजस्ट कर सकते हो. लाइव क्लास में डिक्टेशन हमने लिखा था, फिर बाद में उन्होंने सबने रीड किया और सॉफ्टवेयर पे जाके उसको ट्रांसक्राइब किया. अभी आपने इसको लिखा है, आप इसको अच्छे से पढ़िए और जा करके इसको ट्रांसक्राइब कर सकते हो. हमने वेबसाइट के ऊपर ये डिक्टेशंस जो है वो डाल रखे हैं, आपको ऑलरेडी आइडिया होगा. कोर्ट एग्जाम्स के सेक्शन में आपको यहाँ पर हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का सेक्शन मिल रहा है. उसके अलावा लीगल केसेस वाले अलग सेक्शन है जिसमें आप डिक्टेशंस लिख सकते हो. वहां पर भी आपको काफी सारे डिक्टेशंस मिल जाएंगे. तो ओवरऑल आपको हर टाइप ऑफ डिक्टेशन जो है हमारी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा. उसके अलावा अगर आपको थोड़ा बहुत स्पीड और एक्यूरेसी का इशू है, उसके अंदर आपकी एक्यूरेसी आ नहीं रही है, आपका जो वोवल का पोजीशन है वो गलत बनता है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हो. इसमें मैंने डिटेल में समझाया हुआ है और इस डिक्टेशन की जो पीडीएफ है वो आपको इस साइड में आ रही होगी, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं. तब तक के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक.